Hello friends, this is Dr. Chetan Mahajan. Today I am going to talk to you about the different types of hernias which we encounter. क्योंकि कई बार लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि हर्निया कहाँ है. कोई बोलता है कि सर किसी को पेट पे आ गया, किसी को साइड में नीचे आ गया, ऐसा कैसा होता है. तो what I want to tell you is there are different types of hernias. Okay. Now let us first look at a few very common hernias which we treat in our daily practice, and very frequently seen hernias are what we call as the groin or the inguinal hernias. So these obviously come in the lower abdomen, in the groin, at the fold of the abdomen and the thigh. They are common, most prevalent in male population, not so much seen in female population. The second common type of hernia is a umbilical or a belly button hernia. Now इसमें दो main types है. जैसे for example hernias जो we see in very pediatric or infant age group, जहाँ पे the patient का age is few months or few years, उनमें umbilical hernia दिखाई देता है. And obviously the adult umbilical hernias which we see. So even in inguinal hernias also you may have an infant hernia. इसको कैसे डील करना है, क्या करना है, I'll talk to you in the later part. So belly button hernias are the second common hernias. The third is also what we often keep hearing about is an incisional hernia. Now what is an incisional hernia? वो hernia जो previous पेट पे हुए कट में से आ रहा है. तो किसी को cesarean section हुआ है, hysterectomy हुआ है, someone has undergone a major abdominal operation for an accident. Now when a hernia comes out through these things, it is called incisional hernias. Now there are a couple of hernias जो हमको body के surface पे दिखाई नहीं देंगे, but they are present. Now two commonest of these herniations are what we first call as a hiatal hernia. Hiatal hernia usually is associated with hyperacidity, और वो फूड पाइप यानी इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन के आसपास आता है. दिस इज कॉल्ड एज अ हाइटल हर्निया. द अनदर टाइप ऑफ हर्निया विच इज रेयर इज अ डायफ्रामेटिक हर्निया. और डायफ्रामेटिक हर्नियाज क्या होते हैं कि डायफ्राम यानी कि वो मसल जो लंग्स मतलब छाती के ऑर्गन्स, हार्ट और लंग्स और पेट के ऑर्गन्स को सेपरेट करता है. इट इज़ लाइक अ फ्लैट शीट डायफ्राम. तो जब वहाँ से हर्निएशन छाती में होने लगता है तो इट इज कॉल्ड एज अ डायफ्रामेटिक हर्निया. Some rarer hernias are again what we call as the Swigelian hernia.